Hello student, a very good morning to all of you. Today we will start our third chapter, that is Deep Water, from your book Flamingo, and the narrator of this chapter is William O. Douglas. I am repeating, today we will going to start our third chapter, Deep Water. The narrator is William O. Douglas. This chapter is a great example of the hard determination and the willpower that can make everything is possible. This chapter, Deep Water, is a part of the following excerpt is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas. It means it is the part of the creation by William O. Douglas, O of Men and Mountains. This chapter is having the autobiographical element of the narrator's life. When he was a child, he created a phobia in his mind because he has faced two frightening episodes in his personal life when he was a child. That was the frightening episode, the frightening incidents that created him a fear of water. Narrator himself tells here that first line, it had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. नरेटर बताता है कि जब वो 11 साल का था तो उसे अपॉर्चुनिटी मिली YMCA, जो पूल है स्विमिंग पूल, याकिमा रिवर, उसमें स्विमिंग करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिली. याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. ट्रेचरस मीन्स डेंजरस. कभी भी इसमें जो पानी का फ्लो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है. मदर कंटिन्यूअली वॉन्ट अगेंस्ट इट, kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. It means नरेटर की जो मदर है वो हमेशा उसको वॉर्न करती रही है कि उसको वहाँ नहीं जाना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफ़ी लोग अपनी जान खो चुके हैं. बट YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. याकिमा पूल वॉज सेफ क्योंकि उसका जो डेप्थ है वो बहुत कम था और उसमें डूबना ऑलमोस्ट नामुमकिन था. एंड वाइल इट वॉज 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings. Water wings, a supporting wings for a person who want to learn swimming, and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs because the narrator was very thin, he was very weak. When he swim, when he wear the swimsuit, his skinny legs are disclosed to other ones, that he hates this part. But I subdue my pride and did it. But because he wanted to learn swimming, he has a determination to do that. उसने अपने pride को subdue किया, overcome किया, उसने वो swimsuit पहना and then started to swim. From the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. तो फर्स्ट टाइम जब उसने स्विमिंग पूल में एंटर किया वो डर गया. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. उसका ये डर तब शुरू हुआ था जब वो 3 या 4 साल का था. अपने फादर के साथ सर्फिंग के लिए गया. सर्फिंग, व्हाट इज सर्फिंग? इट्स अ मास formed by the waves breaking on sea shore. I hung on to him, yet the waves knocked me down, swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. तो वो इतनी छोटी एज में जब वो सर्फिंग कर रहा था, he was hanging over his father's shoulders, but suddenly because of a huge wave, he just fallen down from the shoulder and totally buried under the water. That's why he created a fear. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. My father was laughing. Narrator's father was laughing. Why he was laughing? Because he was very much confident that there is no problem because he was a good swimmer. तो उनको पता था कि वो आसानी से नरेटर को बचा सकते हैं. बस एज अ चाइल्ड ही वॉज रियली वेरी मच एफ्रेड. माई इंट्रोडक्शन टू YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear.
तो जब उसने YMCA पूल में स्विमिंग करने का डिसाइड किया, उसका वो फियर, उसका वो डर वापस लौट कर आया. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, because the narrator was very much determined that yes of course he would like to learn swimming. तो उसने जो है अपने करेज को, अपनी स्ट्रेंथ को वापस असेंबल किया. आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. पेडल मीन्स टू से मूव थ्रू द वाटर, watching the other boys and trying to learn by aping them. aping मतलब just copying, to watch them and copy them, कि जैसे दूसरे जो स्टूडेंट्स थे वो जो स्विमिंग लर्न कर रहे थे उनको देख के उसने कॉपी किया. आई डिड द सेम. I did this 2 or 3 times on different days, was just beginning to feel at ease in the water when the misadventures happened. अभी स्विमिंग सीखते हुए कुछ ही दिन हुए थे. He was just feeling comfortable under the water. लेकिन उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई, कुछ ऐसा एपिसोड हुआ जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. I went to pool when no one else was there. The place was quiet. Water was still and the tile bottom was as white as clean as bathtub. तो स्विमिंग सीखने के लिए वो बहुत सुबह स्विमिंग पूल के पास गया. तब तक वहाँ पर ना कोई इंस्ट्रक्टर था और ना ही दूसरे कोई स्टूडेंट्स थे, लर्नर्स थे. तो बिल्कुल जो वाटर था इट वॉज कम्प्लीटली स्टिल एंड नीट एंड क्लीन. आई वॉज timid about going in alone. Timid, he could not dare to enter in the water because he was completely alone there and there was no one to help him out. So I sat on the side of pool to wait for other. तो क्योंकि वहाँ दूसरा कोई स्विमर नहीं था तो उसे अकेले पानी में जाते हुए डर लगा. उसे लगा कि ये बेटर है कि मैं वेट करूँ जब तक कोई और ना आ जाए. I had not been there long when it came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was beautiful physical specimen. तभी वहाँ पर एक कोई यंग बॉय आया जो ऑलमोस्ट 18 ईयर का था. He was looking very hefty and with the legs and arms that showed rippling muscles. He had very strong muscles. Yeah, he yelled, "Hi skinny, how would you like to duck?" उसने मुझे देख के आवाज़ लगाई, क्या कहा? Hi skinny, because narrator was very much thin, he was very much weak. That's why the boy who was very hefty called him skinny. Skinny means a weak boy having a very slim body. How would you like to be duck? Duck, it means would you like to be going underwater? With that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position. उसने बिना किसी प्रीवियस वार्निंग के नरेटर को उठाया और उसको पानी में ऐसे ही फेंक दिया जिस सिटिंग पोजीशन में वो पूल के किनारे बैठा हुआ था. एज इट इज ही वॉज गोइंग अंडर द वाटर. स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट बॉटम वंस टू बॉटम. तो जैसे सडनली वो पानी के अंदर उसको फेंक दिया गया, उसने अपने नाक से, अपने मुंह से पानी को स्वेलो किया. उसके नाक और मुंह से काफ़ी पानी अंदर जा चुका था. I was frightened but not yet frightened out of my wit. Wit माने his thinking power, his brain, his capacity to be judge what is right or wrong. तो वो डर चुका था लेकिन वो जो है काम कर रहा था अपने दिमाग से कि उसे क्या करना चाहिए. On the way down I planned when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो उसने ऐसा प्लान बनाया कि अगर मैं पूरा बॉडी फोर्स जो है बॉटम की तरफ कलेक्ट करूँगा और एक जंप करूँगा तो एक कॉक, एक ढक्कन की जैसे मैं सरफेस पर आ सकता हूँ ईजीली लाई डाउन होकर के, और पैडलिंग करते हुए, गोइंग थ्रू होते हुए पानी से बाहर मैं आसानी से किनारे तक पहुँच सकता हूँ. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. Those 9 feet were more like 90 because the narrator really afraid of water. तो उसको वो 9 feet 90 के जैसे लगे. Before I touched bottom my lungs were ready to burst, but when my feet hit bottom I summoned all my strength, made what I thought was a great spring upward. उसे ऐसे लगा बिकॉज ही वॉज नॉट कैपेबल टू ब्रेथिंग, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग. तो उसके बस्ट उसको लगा कि उसके लंग बस्ट हो जाएंगे और वो कोशिश कर रहा था कि वो पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके किसी तरह से अपनी बॉडी को पानी से बाहर लेकर आए. I imagine I would bob to the surface like a cock. Instead I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water.
तो उसने फिर से कोशिश की, लेकिन पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वाटर एंड वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग टू इट। आई ग्रू पैनिकी। आई रीच अप, तो वो पैनिक, वो घबरा रहा था, उसका वो डर, उसका वो जो फियर था। आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर। उसको ऐसा इमेजिन हुआ कि देयर इज़ अ रोप इन फ्रंट ऑफ हिम, उस रोप को, उस रस्सी को वो पकड़ सकता है, क्लच कर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि देयर वॉज नो एनी काइंड ऑफ रोप वॉज देयर, तो केवल पानी ही उसके हाथों में था। ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग टू हैविंग अ रोप देयर। आई वॉज सफोकेटिंग बिकॉज ही कुड नॉट एबल टू टेकिंग ब्रेथ, तो इसीलिए वो सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू यल बट नो साउंड, यल मतलब टू क्राइड आउट, क्राइड फॉर हेल्प, उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, उसने बहुत कोशिश की, सिर्फ उसकी नोज और जो है उसकी आइज पानी से बाहर आई, लेकिन मुंह नहीं आ सका। आई फ्लेट एट द सरफेस ऑफ वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. They paralyzed and rigid. Great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. After creating a long effort, it was not possible to be him to come out from the water because he was not a good swimmer. At least he was really having a fear of water. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fight an irresistible force. Nightmare, like a very dangerous and a bad dream we usually see at nights. And I had lost all my breath. My lungs ache, my head throb. तो उसके लंग्स में पेन शुरू हो गया, उसे लग रहा था जैसे कोई उसके हेड पर बार बार अटैक कुछ कर रहा है. आई वॉज गेटिंग डिजी, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस. लेकिन वापस उसने अपनी स्ट्रेंथ को फिर कलेक्ट किया, अपने ब्रेन, अपनी विट पावर को फिर से उसने कलेक्ट करते हुए ही अटेम्प्ट अगेन, उसने फिर से कोशिश की पानी से बाहर आने की. आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म, थ्रैश विद माई लेग, देन आई वुड गेट द एज ऑफ पूल, बी सेफ. मुझे लग रहा था कि फिर से मैं अपने जो बॉडी पोस्चर्स को, अपने मूवमेंट्स को क्रिएट करूँगा तो पॉसिबली मैं सेफली बाहर आ सकता हूँ. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन नहीं, मैं पानी के अंदर और अंदर जाते रहा था. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. पानी अब मुझे बिल्कुल डार्क लगने लगा था, क्योंकि उसका ब्रेन भी शायद डेड होने लगा था. एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding. एक अजीब से डर ने मुझे घेर लिया, ऐसा डर जो मैं समझ नहीं पा रहा था. terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. All the body parts have totally become paralyzed. सिर्फ उसका हार्ट बीट जो चल रहा था या उसका जो ब्रेन वर्क कर रहा था, they were only two symptoms that he could realize he is alive. Otherwise, he was thinking that all the body has become paralyzed. And then in the midst of terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toe reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for rope, ladder, water wings, nothing but water. He tried to having anything, any aid to be make his life safe, but there was nothing. ना वहाँ पर कोई सीढ़ी थी, ना कोई रस्सी थी, और ना ही कोई वाटर विंग्स और अदर इक्विपमेंट जो उसको पानी से बाहर निकाल सके. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. स्टार्क टेरर टुक एन even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arm wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. So this is really a very a good analysis that how the narrator was feeling when he was underwater, because there was no one to help him out. And every single line of his narration is clearly depict that how he was feeling at that time when he was going under the water. He was just trying again and again to come out himself from the water, but it was not possible to him because he was not a good swimmer. At least he was really afraid of creating an effort of water. So
narrator is trying him again and again. That's of course I can do it, but not possibly because he was not a good swimmer. And then strangely there was light. I was coming out of awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air, got water. The yellowish light was going out. The narrator trying to inhale or exhale. But as you know that he was under the deep water, it was not possible for him to survive to taking any breath under the water. That is why he has lost all his hope to make his life survive again. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and the blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. अब उसका ब्रेन भी उसकी बॉडी के जैसे डेड हो चुका था. धीरे धीरे उसका वो पैनिक, उसका वो डर जो है वो लूज होते जा रहा था, बिकॉज उसका जो ब्रेन है वो डेड होने लगा. नो नीड टू जम्प, टू टायर टू जम्प. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. He was realizing that he is going to sleep in his mother's lap because his brain was also stopped to working. That is why he is realizing that is nothing else, no pain, no terror, nothing was there, because he was realizing very dizzy and became unconscious and feeling like he was sleeping in the arms, in the lap of his mother. So student, we will continue the rest part of the chapter tomorrow.